गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। तो यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का उसको अप्रूव कर दिया है, जिसके अंदर कुछ मिनरल्स की जो है वो रेट ऑफ रॉयल्टी तय की गए हैं। मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन करेगी और उस पर जो है क्या रेट ऑफ रॉयल्टी गवर्नमेंट लेगी, ये सब डिसाइड कर लिया गया है। तो एक्चुअली भी क्या होता था कि एक ग्लोकोनाइट, पोटैश, एमराल्ड, प्लैटिनम, एंडाल्यूसाइट, सिलिमेनाइट, मॉलिब्डेनम जो है, इन सब की जो है अभी तक हम माइनिंग जो है वो इंडिया में नहीं होती थी। तो अब जो है इन मिनरल्स की भी माइनिंग अलाउ कर दी गई है। तो जो है ऑक्शन की जाएगी इन मिनरल ब्लॉक्स की। और ऐसा इंडिया में पहली बार होगा कि इन मिनरल्स की भी माइनिंग की जाएगी। तो अभी तक तो हम इनको इम्पोर्ट करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि जब हमारे पास खुद के इसके रिजर्व्स हैं तो हम इसको जो है खुद ही माइनिंग करना शुरू करते हैं। तो अब इसके कुछ मिनरल्स के यूजेस देखते हैं। जैसे ग्लोकोनाइट और पोटैश जो है वो हमारे फर्टिलाइज़र के काम आते हैं एग्रीकल्चर में। प्लैटिनम आपको पता है कि जो है आपकी ज्वेलरी में भी काम आता है, हाई वैल्यू मेटल है। फिर एंडाल्यूसाइट और मेलिब्डेनम जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साहित्योत्सव। तो साहित्योत्सव एक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है जो कि साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइज कराता है। तो ये इंडिया का मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है, जो कि अब अगले 5 दिन में जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो अब फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जो है ये, इसके अंदर हम इस बार का थीम है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम जो हमारी साहित्य अकेडमी है उनकी इवेंट्स को, अचीवमेंट्स को दिखाया जाएगा, इवेंट्स रखी जाएंगी, ताकि इन पिछले कुछ जब से ये बना है 1954 से, तो क्या अचीवमेंट्स नहीं है इसके ऊपर भी जो है डिस्कशंस की जाएंगी। तो साहित्य अकेडमी के बारे में भी देखते हैं। तो इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है ये। लिटरेचर को प्रमोट करने का काम करती है। 1954 में बनाई गई थी। ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है वो सपोर्ट करती है। इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था, और लेकिन बाद में जो है इसको एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर कर दिया गया, इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंदर। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रुपी स्वैप। तो अभी आपको पता है आरबीआई ने $5 बिलियन का रुपी स्वैप ऑक्शन किया है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी में रुपी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि रुपी का फ्लो ज़्यादा है और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम है हमारे पास। सॉरी, फॉरेन करेंसी जो है वो कम सर्कुलेशन में है। तो उससे होगा क्या कि आपके जो है डॉलर की जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब $1 में जैसे 77 रुपीज़ तक पहुंच गए थे, तो हमारे को जो है वो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आने लग गया था। तो जो है आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि हम कुछ डॉलर्स को बेचते हैं, जैसे $5 बिलियन को बेचा। तो इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी जो रुपी की है, जो रुपी बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है, उसको सक इन कर लिया जाएगा और डॉलर्स जो है वो ज़्यादा मार्केट में आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये 77 जो पहुँच गया है रुपी, ये थोड़ा कम हो जाएगा, 76 या 75 तक आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा हमें। ठीक है। सो अब जो है 77 पहुंचने की वजह से जो है हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट जो हमारे आरबीआई ने डिसाइड किया कि इसको हम कंट्रोल करते हैं। हम मार्केट में अपने फॉरेन एक्सचेंज में से जो है $5 बिलियन की ऑक्शन करते हैं, उससे हम रुपी को सक इन कर लेंगे। ठीक है। अब ये रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कि समझ लो कभी हमारी जो है रुपी की लिक्विडिटी कम हो गई है, रुपी कम मार्केट में है, और हमारे जो है वो रुपी जो है डॉलर में समझ लो कि 60 रुपीज़ पर चला गया, कि $1 में सिर्फ 60 रुपीज़ हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा ना। तो उसको हम रिवर्स करने के लिए फिर क्या करते हैं कि हम जो है डॉलर बाय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ताकि जब जब जो आरबीआई बाय करेगा डॉलर, तो वो रुपी को जो है मार्केट में छोड़ेगा, करेंसी मतलब लिक्विडिटी बढ़ाएगा। तो रुपी जब ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उससे, तो रुपी की जो वैल्यू और डॉलर की जो वैल्यू है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, 70-75 के आसपास हो जाएगी। ठीक है। सो इससे अब हमारा जो ये आरबीआई ने ऑक्शन किया है, इससे हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा और रुपी भी जो है थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूपीआई 123 पे। तो अभी आपको पता होगा, आप यूपीआई की ऐप्स यूज़ करते हो, लेकिन फीचर फ़ोन्स जो होते हैं, जो उनमें अभी तक उनको कोई ऐप्स नहीं चल सकती हैं, यूपीआई की आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो यूपीआई जो है आरबीआई ने डिसाइड किया कि उनके लिए भी एक यूपीआई कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, जो फीचर फ़ोन वाले यूज़र्स हैं। उनके लिए 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है आईवीआर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो मतलब उसमें क्या होगा कि वो एक कॉल करेंगे, और फिर जैसे आपको होता है कि ये बटन दबाओ, फिर वो बटन दबाओ, फिर अपना पिन एंटर करो, तो उससे वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे पैसा। ठीक है। फिर दूसरा है ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी। तो वो एक फ़ीचर फ़ोन्स में भी कुछ ऐप्स डल सकती हैं, तो वो उसके लिए एक ऐप बना दी जाएगी। ठीक है। तीसरा है मिस्ड कॉल फैसिलिटी। मिस्ड कॉल में क्या होगा कि एक नंबर होगा स्पेसिफिक,
आप उस पर कॉल करोगे, मिस कॉल मारोगे, तो आपको वो कहाँ से कॉल वापस आएगा और आप उनकी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आप जो है कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जिन जो कि साउंड वेव्स का यूज़ करते हुए दो फ़ोन्स जो है वो आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उनका यूज़ करते हुए भी हम कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर भी यूपीआई चल सकेगा। ठीक है, तो यूपीआई आपको पता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पर चला सकते हो और उससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। पीयर टू पीयर जो है वो ट्रांजैक्शन होती है, और आपको पता है मोस्टली सारे बैंक्स ने अपने अपना यूपीआई ऐप निकाला हुआ है, और मार्केट में दूसरे जैसे पेटीएम है, फिर फ़ोनपे है, अमेज़ॉन पे है, व्हाट्सएप पे है, बहुत सारे और भी जो है वो अपने अलग अलग से यूपीआई की ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब इसको यूपीआई को बनाया किसने? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस ऐप को बनाया, यूपीआई सिस्टम को बनाया है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यूपीआई की, और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ जो है वो आरबीआई और इंडियन बैंक्स जो है उन्होंने मिलकर बनाया है उसको। ठीक है, अब पहले तो सिर्फ 10 कोर प्रोमोटर बैंक्स थे इसके, लेकिन अब 56 मेंबर बैंक्स हैं जिन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया है। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर किया गया हुआ है, और उसी के बेसिस पर जो है ऐसी इनिशिएटिव्स, यूपीआई जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं। इवन रुपे कार्ड जो है हमारा, वो भी एनपीसीआई का ही कार्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। तो अब इसके अंदर क्या है कि यूनियन लेबर मिनिस्टर ने जो है डोनेट अ पेंशन कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो स्कीम है, उसके अंदर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर को जो अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन देनी होती है, वो पेंशन अगर वो नहीं पे कर पा रहा है, तो इसमें डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव में कहा गया है कि सिटीजन उनके बिहाफ पे वो पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक स्टाफ है, ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, उनको ये स्कीम आप लेके दो, गिफ्ट करो उनको, आप उनके बिहाफ पर आप पेंशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो आप पे कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। तो ये डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 की ये स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एलआईसी और जो है हमारे कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्कीम निकाली गई है ताकि उनको ओल्ड एज जो है वो पेंशन मिल सके। वॉलंटरी है, टोटली कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, समझ लो 55 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जितने भी उनके वो एज के हिसाब से डिसाइड होगा कि उनको कितना महीने का देना होगा अपने अकाउंट से। और उनको फिर इसमें 3,000 रुपये मिनिमम जो है वो 60 साल के बाद, जब वो 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद मिनिमम 3,000 रुपये पर मंथ की जो है वो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब अगर उनकी जो है वो सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो उनके स्पाउस को वो हाफ पेंशन मिलेगी इसमें, अगर जो उन्होंने ये सब्सक्रिप्शन लिया है इस स्कीम का। तो ठीक है, अब एंट्री एज जो है वो सब्सक्राइबर की 18 टू 40 ईयर्स है, और मंथली इनकम उनकी मिनिमम वो मैक्सिमम 15,000 होनी चाहिए, उससे कम या उस मैक्सिमम 15,000 होनी चाहिए, तभी वो इस स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है, तो 50-50 बेसिस पे चलती है ये स्कीम, मतलब 50% जो है वो अनऑर्गेनाइज वर्कर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी पेंशन के स्कीम के लिए, और 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957. So Union Cabinet has recently approved the proposal of Ministry of Mines in which the rate of royalty has been decided for certain mineral blocks like glauconite, potash, emerald, platinum, andalusite, sillimanite, molybdenum. So these are the minerals which were earlier imported, but now we have found their reserves in India. So now the government has decided that we should start mining it in India itself. Okay, so that's why the entire procedure of this of of mining these minerals has been kickstarted, and this will be the first time these minerals will be auctioned in the country, and these mineral blocks will be mined by the of course the private or public sector companies. Okay, so the uses of these minerals, so what is important for you is not the initiative or the what is the rate of royalty. So you should be knowing that these minerals are being mined for the first time in India, so you must be remembering their names and what are their applications. Like glauconite and potash are of course used as fertilizers in agriculture. Platinum, you know that it is a high value metal, you see it in jewelry also. Andalusite and molybdenum have industrial applications. So there could be a question on these minerals specifically, like you may get a statement that these minerals have been get these minerals are being mined for
centuries in India, or let's say since independence, these minerals are being mined. So that statement would be incorrect, because this is the first time we have started to mine these. We are planning to start mining these minerals in India. Okay. So now let us see the next topic, which is Sahitya Utsav. So Sahitya Utsav is the festival of letters conducted by Sahitya Academy, and this is the most inclusive literature festival of India, and it will be held between 10th March and 15th March. Okay, so this festival of letters will commemorate the 75th anniversary of India's independence, and in this exhibition, or you can say Sahitya Utsav or festival, Sahitya Academy will showcase its achievements since its inception in 1954. Certain events will have also been planned. So about the Sahitya Academy, it's India's National Academy of Letters, and it is aimed to promote literature in the languages of India. It was founded in 1954. Of course, it is supported by the government, but it does not fall into the domain of government. It is independent of government. Okay, so it was initially launched by the executive order, but later on it was registered as a society under the Indian Societies Registration Act of 1860. So now let us see the next topic, which is rupee swap. So RBI has recently conducted a $5 billion rupee swap auction, because it wants to manage liquidity in India. So you know that the dollar price, the dollar was getting strengthened and our rupee was getting weakened, and because of that our imports were getting costlier, leading to inflation. So RBI decided that it wants to strengthen the rupee, that so that our imports can get a little bit less expensive, because you know that crude oil prices are reaching historic highs, so we're already suffering losses. So we want to at least support the rupee at this moment. That's why RBI has sold $5 billion. So what would happen with that? So because RBI is letting out $5 billion into the market, so it will in exchange take out a certain amount of money, a certain amount of rupee from the market. So it will basically suck out rupee from the market, leading to reduction of rupee liquidity in the system. So it can also happen in the reverse way. In case we want to strengthen the dollar so that we can boost our exports, we can do it in the reverse way also. Like we can this RBI can start purchasing dollars from the market, so that rupee can be introduced, or rupee can be flowed into the system. Okay, so that would lead a reduction of the value of rupee in terms of dollar, but that would of course help the exporters. Okay, so of course it will. So because the government because the RBI has because the RBI has conducted this swap auction by sucking out rupee from the system, this will lead to a reduction of inflation in the market, and it will of course strengthen the rupee. Okay, so of course importers will enjoy will have a good time, but exporters will suffer, because because strengthening of rupee hurts our exports. Okay, so now let's see the next topic, which is UPI 123 pay. So recently RBI has launched this new UPI interface solution or payment solution for feature phone users. You know that smartphone users have their own UPI apps. Several apps are there in the market, but feature phone mobile users often remain secluded from this UPI systems. So now the government, or rather we can say RBI, has come up with four options for them. So for the first one, of course, is interactive voice response. Under this, the transaction can be made using a secure call, and you know that you get this IVR number, that press 1 for initiating a transaction, now press 2 for this, and all that. So the second one of course will be an app based functionality. So certain feature mobile phones also have the apps, and they can be pre-installed in those feature phones, through which the transaction or the UPI can be initiated, transactions can be initiated. The third one of course will be a missed call facility. So the user can give a missed call on a particular number, and then in return they will receive a call through which they can make a transaction. Okay, using of course the information
on that call. The last one is proximity sound based payment. So certain mobile phones communicate with each other using sound waves. So it will of course allow these contactless transactions between those phones, and this will of course, this is how UPI can also transact, and it can work in making transactions. Okay, so what is UPI? I think you all may be knowing about it at this moment at least, that you can use a single mobile application for all your bank accounts, or most of your bank accounts. So peer-to-peer transaction can be initiated through this UPI, and this UPI has been made by National Payments Corporation of India, which is the umbrella organization of retail payments and settlement systems in India. So NPCI has also launched another initiative, that RuPay cards. Okay, so this NPCI is itself an initiative of RBI and Indian Banks Association, and initially 10 core promoter banks were there in this Indian Banks Association, who along with RBI launched this NPCI. But later on, several other member banks joined it. Now 56 member banks are there in this NPCI system. So NPCI has been registered as a not-for-profit company under the Companies Act. Okay, so now let us see the next topic, which is Donate a Pension initiative. So recently, Union Labour Minister has launched this Donate a Pension campaign for Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan scheme. So you know that this under this Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan scheme, unorganized workers are assured a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years, with the condition that they should also contribute some amount during their working period of 18 to 40 years. So in case these unorganized workers are unable to pay their contribution, the citizens who have employed these workers, let's say you have a domestic help at home, you have a driver, you have a helper, or anyone else who is working in unorganized sector at your home, so you can donate the premium amount on their behalf. So that's what this is what a Donate a Pension initiative is. Okay, so about this Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana, it's of course a central sector scheme launched in 2019. So it is being implemented by LIC and community service centers in India. So it is meant for old age protection and social protection and social security of unorganized workers. So of course it's a voluntary scheme and contributory pension scheme. So once the subscriber, who is between the age of 18 to 40 years, subscribes to the scheme, they will have to pay he will have to pay, or he or she will have to pay some money. Of course it would depend upon the age of the individual. So that money as the premium would go, and the matching contribution will be given by the central government also. And after the completion of their 60 years of age, they will receive at least 3,000 per month pension. Of course it could be higher also. And in case of a death of the subscriber, the spouse of that beneficiary will be entitled to receive 50% of the pension as family pension. Okay, so of course there is another condition, that apart from age, there is another condition, that the subscriber, who is the unorganized worker, should not have a monthly income of more than 15,000 rupees. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.